हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैसफी गेमर एक्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का होराइजन ज़ीरो डॉन के एक नए पार्ट में। तो फाइनली हमने पिछला बार तो अपना सारा सामान, जैसे रोश ने कहा था कि हमें ये ट्रिप कास्ट खरीदना था और क्या था यार, हाँ ये स्पार्क आई थिंक, हाँ वो जो स्ट्राइडर के पीठ पे लगे नहीं रहते वो, उसे कलेक्ट करना था। यही है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्लेज ब्लेज। अरे रे देख लिए, आने दो बढ़िया है, इसको भी दो लपेटा। और एक कोई आता है, और साले जल्दी हो, इसको पीछा के और एक आता, जल्दी इधर आओ। सब भाग गया, खड़ा होके देखते हैं कि इधर आओ। तुम लोग से भी सामान आके लूटते जाएगा। तीर बनाने के लिए सामान का कमी नहीं होना चाहिए। आया एक सांड बन गया, अरे तीर खत्म हो गया। आराम से बढ़िया। अरे वो आ रहा हूँ, बढ़िया लूट ले। बाकी भी देखते हैं साले, हाँ देखने से कोई मतलब नहीं, सबको ढेर करके जाएंगे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, पिछला बार जैसे रोश ने कहा था ट्रिप कास्ट और यही ब्लेज जमा करने के लिए हम लोग का फायर एरो का कोई ज़रूरत है। तो जैसे रोश ने बताया था कि अभी हम लोग का एक फाइनल लेसन, आखिरी सीख कुछ बाकी है जो रोश हमें सिखाना चाहते हैं। फिर आया आ जाए, भाग क्या ओ और ये चलो, ये भी ढेर। हाँ वो जो है एक आखिरी, रोश ने कहा था कि हमें एक आखिरी लेसन एक बाकी है जो हमें सीखना है। क्योंकि जैसे ही हम लोग ये मदर्स लैंड, आई थिंक ये एरिया का नाम है, वो एरिया के बाहर बहुत सारे खतरनाक मशीन है, तो उनका सामना करने के लिए वो कुछ हमें सिखाना चाहता है। एक आखिरी लेसन, आखिरी सीख है जो, उसके लिए हमें सामान जमा करने को कहा था। तो हम लोगों ने सामान भी जमा कर लिया है। तो चलो फिर चलते हैं, जाके वो लेसन भी हम लोग सीख ही लेते हैं कि आखिर क्या है और क्या सिखाना है। रोशनी तो सारे अभी भी देखते हैं बराबर, छोड़ो हम लोग चलते रोज का बस इधर है ना। Whatever they're hunting out there doesn't sound easy. I think ये इधर ही बैठा है। There he is. अरे ये रहा। You're here. हाँ हम आइए हम लोग। You have the firearms. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Until then, we wait. Look, Rost. I've thought it through, and I'm not going to shun you after the proving, okay? I won't do it. I'm not about to pretend that you never raised me. Aloy, the law forbids all contact. It does, and I don't care.
I know what duty means for you, Rost, but all tribal law has ever done for me is take things away. And that's not gonna happen again. Aloy, I must obey the law. And so you will. I knew you'd say that, so this is what we'll do. I'll come to you in secret. No one will see me, so I won't get in trouble. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. You've put a lot of thought into this. I know. So you can stop worrying. It's handled. Yes. So it is. I saw Karst and got that tripcaster I was talking about. I hate to think what that outlawed trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. Still a while to go before dark. I guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. चलो फिर रात का इंतज़ार करने को कहा है रोशनी। और बातों बातों में हमने रोश को समझा तो दिया है कि जो अभी हमें हमारा आने वाला जो प्रूविंग टेस्ट है नोरा ट्राइब के अंदर, वो अगर हम पार्टिसिपेट करके हम जीत भी जाएंगे, पर फिर भी हम रोश से ज़रूर बात करेंगे, चाहे वो छुप छुप के हो या आमने सामने, चाहे जो भी होगा। एलॉय बराबर मिलने आते रहेगी रोश से, क्योंकि रोश ने जैसे कहा है कि वो ट्राइब के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, ये ट्राइब के रूल के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि रोश उस टाइम फिर आउटकास्ट वाला ही रहेगा और एलॉय जो है वो ट्राइब की मेंबर बन जाएगी। पर कोई नहीं, हम लोग बराबर आएंगे छुप छुप के, चाहे कोई कितनी भी बोले। चलो फिर चलते हैं, रात का वेट करते हैं। तो ये है वो गेट, तो इसके बाहर हम लोग ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. ओके, तो ये तो यार वो बाउंड्री का अंदर जितना मशीन है उससे बड़ा है, और ये काफ़ी बड़ा और शेर का जैसा क्यों दिखता है? क्या है, देखते रुको। अरे यार ये तो काम नहीं करता है, इसमें पता नहीं चलता स्कैन करके। तो जाना कहाँ आगे? फॉलो टू द पॉट। काफ़ी आग लगा हुआ है यार। Follow the path. It's not far. That cabin. What happened to it? A machine, that's what. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Oh. I see. तो ये मशीनों ने तबाह किया है। ये दे और एक। ओ भाई, ये तो पूरा का पूरा नाश मार दिए, आगी उगी लगा हुआ है। मशीन का नाम क्या है? सॉटूथ। देखने से तो शेर का जैसा ही लगता है।
I'll watch your carcass. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. सामान भी लेते लेते जाना ना, क्या पता क्या आ जाए सामने। यार पूरा का पूरा बस्ती था लगता, पूरा तबाह कर दिया। क्या एरिया का नाम है? मदर राइस। ओ कुछ अच्छा अच्छा इसका बोले क्या है? रुको रुको, सामने कुछ है। ओके वॉचर है, इसका तो टेंशन नहीं, ये तो इतना नहीं कर सकता। वो जो ऊपर सॉटूथ था ना उसका नाम, हाँ वही तबाह किया लगते है सारा कुछ। रुको इसको भी ढेर करके जाते थे। अरे उधर भी कुछ सामान पड़ा है, देखो देखो देखो। अरे ब्लडी फुल इधर देखो। Down. Good. Noticed. It won't be much farther now. Why are we the only ones out here tonight? Why can't the tribe's braves hunt this machine? They did. The kills we've passed are theirs. Tomorrow, they will hunt again. They won't need to. This machine will be my kill. Or your death, if you're not careful. हाँ हाँ ध्यान से ही जाएंगे, मशीन कैसा हम लोग को मार देगा। हम लोग से भी जितना होएगा उतना तो धोएंगे बराबर। ये काम तो नहीं है अभी, इसका पता नहीं क्या काम आता है, देखेंगे आगे। हमारा अभी क्या मेडिकल पाउच तो, हाँ मेडिकल पाउच तो खोल लो। तो पूरा का पूरा तबाह कर दिया है, क्या हालत है, चारों तरफ आग ही आई है। लकड़ी जमा कर लो, तीर बनाने काम आएगा। वो तीर भी बना ही लेते ना, क्या मालूम, तीर बना के पहले से रेडी रखो। कुछ दिखा है लगता। An entire lodge wrecked by sawtooths? How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. ओ भाई Huge. How do you defeat it? That will be for you to decide. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. I should stay out of sight. I can use the Whoa. tall grass to approach. Okay, क्या let's see. बात। Where can I place my traps? रोस्ट क्या बात बोला कि अभी आगे का रास्ता जो है वो हम लोग को चुनना है, कि वो शिकार हम लोग कैसा करते हैं वो हम लोग ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग को कुछ होता भी है तो रोस्ट हम लोग का बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, और देखा जाए तो रोस्ट ज़रूर बचाएगा तो अगर मुसीबत में रहेगी अलाय कभी। अरे यार ये देखो यार क्या भारी चीज़ है। रुको रुको, वीकनेस इसका आगे है भाई, चलने का तो आवाज ऐसा आता है कि आदमी का हवा पानी सुखा देगा। टू पॉइंट ऑफ द स्पीयर किल द सॉटूथ। ओके ए रुको, वो ट्रिप कास्ट हमने लिए क्या करनी थी? ये बिजली देने का। अच्छा आगे वाला तो हाँ, मतलब ये सॉटूथ मारने का काम आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये वाला एक बार ना ट्राई मार के देखते। रुको कहाँ गया वो? अच्छा अच्छा रुको, नीचे है ना, फटाफट उसको बिछा के देखते हैं इसका रास्ते में। आएगा तो पगला हो जाएगा ना बवा वाला, थोड़ा मज़ा लेंगे इसका भी। ये रास्ता आता ना, आने तो साले
ओ आ गया जल्दी 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 एलॉय बिछाओ। No good without the right ammo. निकल लो इधर। ऊपर से खड़ा होकर देखते पहले क्या होता क्या है, इसको बिजली से क्या फ़र्क पड़ेगा। आखिर ट्रिप कास्ट लिए क्या करने, ये पगलाएगा पहले तो देखते। अरे रॉस कहाँ है? अरे आया आया टकरा गया। अरे अरे मिस हो गया, आगे का देखेंगे। मरेगी। आराम से बाबा, आराम से जाएंगे। रुको रुको रुको। ओए स्टैचू क्यों हो गया? बिजली से एक जगह अटक गया ना। रुको ना, इसका वीकनेस और कुछ नहीं है क्या? वो नीचे ही वाला है। यहाँ आगे से मारने से। रुको एक बार इसको ना इधर आ जाने दो, उसका बाद चलाते इसको ऊपर। आगे जो फंदा लगाया है ना, ये ट्रैप आने दो इधर पहले। ओ पकलेट इधर। नहीं उंगली नहीं करना, पहले आने दो। इधर इधर आओ आओ आओ। आया। अबे इधर उधर क्या देखते, सीधा आओ इधर। अपना लाइन टू लाइन चलो, लाइन तोड़ना बुरी बात है। पगला हो मारो अभी मारो आगे फटाफट आगे लगा दो। भाग गया साला, छोड़ेगा नहीं इसको। हमको तो लगा ये बड़ा खतरनाक होएगा। ओ वापस आ जल्दी चलो जल्दी। ओ तीर निकालो यार, मारो साले को। ओ मारा। आगे लगाते रहो साले को। ओ भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। तीर खत्म। मरेंगे हम लोग, मरेंगे। भागो इधर से एलॉय, भागो। लफड़ा हो गया। ये तीर कहाँ है? मर गया रे। ओ भाई तगड़ा चीज है ये, सामान भी ज्यादा है। Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. These are Nora hunting lands. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many Braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years, you've trained to win the proving, but only for yourself. As a Brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn. And remember it. After the proving. And after I'm gone. We're finished here. Follow. सही कहा है रोश ने। Dawn has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way. I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in.
Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll go back to the cabin with you. I'm not heading there just yet. I have other plans. Oh. Such as? I'll be waiting for you when it is time. I'll see you at Mother's Heart then. You will. तो यही था वो सीख। तो रोस्ट हमें सिखाना चाहता था कि बाहर की दुनिया जो है वो इतनी आसान नहीं है। यहाँ अगर जीना है तो हर चीज़ का इज्जत करना है और अपना लड़ने का तरीका अपने आप को काबिल इतना बनाना है कि किसी भी मशीन का सामना हो हमें कैसे भी करके उससे लड़के बच के निकलना भी है और इंसानियत की रक्षा करनी है। अब जैसे कि रोश ने हमें बताया कि जैसे ही हम लोग ट्राइब के मेंबर चाहे बन भी जाए तो वो जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ कोई भी इंसान हो, यहाँ का हो या बाहर का, उन सभी इंसानों को प्रोटेक्ट भी करना होगा। साथ ही साथ हमें सबकी मदद भी करनी होगी, क्योंकि चाहे उन लोगों ने हमारे साथ जैसा भी सलूक किया हो पर हमें उन जैसा नहीं बनना है। हमें सबकी मदद भी करनी है और अपने अच्छाई को साबित कि हम कितने महान हैं। महान क्या बोलेगा यार, जो भी है यार, हम इंसानियत के नाते जो भी हो, हम ट्राइब के मेंबर बने या ना बने, पर मदद सभी का करना चाहिए यार। मुसीबत में कोई भी हो तो ऐसी तो छोड़ के नहीं भाग सकते ना। चलो फिर रोश ने जैसे कहा है, अभी हम लोग का वो नोरा ट्राइब में प्रूविंग टेस्ट आ चुका है। चलो वह जाने से पहले इसको स्वीकार कर ले, पार्ट जमा कर लेंगे। क्या मालूम ऊपर क्या है। वाह, हद तक क्लियर है। और कोई वाह वाह, और सुंदर, तुम यार ही कभी आया और कोई। अरे पार्ट्स तो मिले नहीं दो, सब भाग जाते इधर से उधर। ये रुको सामने ना कुछ अलग। ये क्या? अच्छा ये स्क्रैपर है ना। वो पिछला बार जो हम लोगों ने मिशन में किया था, वो लड़की का अम्मा का स्पीयर लेके भागा था। इसको ढेर कर इधर। खतरनाक मेडिकल आधा से ज़्यादा भाग गया। भाई साहब गोली भी चलाता है, फायरिंग देता है, फायरिंग कंटिन्यू। ये कोई और एक है लगता है। कौन है ये? तो स्ट्राइडर है। छोड़ो, हम लोग का काम है पार्ट्स बिनना और फिर सीधा उधर कहाँ रोश वेट करता है, शायद से बाहर वाला गई है। हम लोग को जाना है उधर पे मिलने। तो क्या हेल्थ तो बहुत कम हो गई है, सामान बिनते बिनते हेल्थ भी बढ़ा लो अपने। ये क्या है? पत्थर है। प्लांट चाहिए यार मेडिकल का। Snow. It's not getting any warmer out here. मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बर्फ गिर रही है, पर इस बर्फ का क्या करें। पहले तो हम जाते जाते ये सब बिनते रहेंगे और रोस्ट से बात भी कर लेते जाके। क्या बात है। Save these for the trail. ज़्यादा दिन तो है। कौन है? तीर तैयार करो।
कोई भी जरा सा आवाज होता भी तो फट से देखना। अरे अरे ये यहाँ में प्लांट। चलो मेडिकल फॉलो हो गया। चलो अभी भाग के चलते। ओ इधर देखो। इस लोगों को मारने का बड़ा आसान तरीका है यार। इस लोगों का आँखी में एम लेके मारना। किसी को डाउट तो हुआ था। सिग्नल देते हैं क्या अपना साथी को? अरे री बच गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते सबका सामान लूट के जाएंगे। अरे वो स्किल डाले थे ना। रुको पत्थर है ना, बुलाते हैं इसको कोई लोग। वो स्किल यूज करेंगे। आ जाओ इधर इधर ब्लडी फुल। ओ ये सही स्किल है यार, बड़ा काम का चीज है। और हम लोग को 2 स्किल मिला है ना। देखते क्या क्या डाल सकते हैं। कहाँ था स्किल? अच्छा ये क्या है? ओहो ऊपर से कूद के स्ट्राइक करेगा। और भी देखते रहो। क्रिटिकल हिट प्लस अच्छा ये ऊपर में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है क्या अभी? अच्छा ये स्लो मोशन में है। नहीं इसका तो अभी जरूरत नहीं है। इसको आगे भी डाल सकते हो। इसका भी इतना कोई टेंशन नहीं है। ये यार दोनों बाद में डालते रहो। ये क्या होएगा? एडिशनल नेचुरल रिसोर्स व्हेन। अच्छा ज़्यादा कर जमा कर सकते हैं। और ये क्या? शर्ट्स नहीं यार ये ले लेते हैं हम लोग एक बार, बिकॉज ये बड़ा काम आता है। लड़ाई करने का टाइम बड़ा काम आएगा। ये दोनों काम करें। ये भी सभी काम करें। और अभी हम लोग को लगता है ये ले लेना ठीक है। ये ठीक है ये लेते हैं। चलो फिर थोड़ा ही दूर है ना, 180 कदम दूर। कमती होता है जल्दी नहीं चलते। वो जगह तो बड़ा सही है। व्यू काफी बट चलो ये पहुंच गया लगता है। रोस्ट कहीं अगल बगल ही होना चाहिए। मदर्स हार्ट मदर्स वॉच। ये जगह वॉच है, ये जगह हार्ट है। तो इधर जाना है ना मदर्स हार्ट में हम लोगों को। तो यहाँ रहते हैं वो ट्राइब वाले, नोरा ट्राइब के लोग। अच्छा ये रहा रोस्ट। चलो बात कर लेते। So, it's time. Are you ready? Yes, I guess. It's louder than I expected. You've never been so close before. I guess everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? Any final lessons before I head in? No. You've learned every lesson the wilds have to teach. It was you who taught me, not the wilds. Not sure my bow and spear will be much help in there, though. It is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. What should I expect once I'm inside?
be people celebrating and feasting, more than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. It is the seat of the High Matriarchs, a center of Nora life, a jewel of the sacred land. Give it time, and you'll grow fond of it, as I was, back when I was at the tribe. Are you sure they're gonna let me in? I've told you, Aloy. By law, any child outcast can run in the proving. And any who pass are made braves and are outcasts no more. I know that. But not everyone follows the law like you do, Rost. Have faith, Aloy. The tribe will honor your right. I'm ready to do this. See you back home in a few days? You will not find me there, Aloy. Here. Take this, too. Remember. Why are you talking like we'll never see each other again? No. No! You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye. नहीं यार then go to नहीं I see. I'm glad to have this then. It will remind me of you, of everything you did, and how you helped prepare me for this day. Thank you. Heavier than it looks. But the cord is strong. May All Mother bless you, Aloy. And you. How could he do this? Today of all days. I have to keep my mind on the proving. बड़ा कठिन होता है यार ऐसे इतने साल एक साथ रहने के बाद इस तरह अलग हो जाना और रोश ने जैसे कहा कि वो उनसे बहुत दूर चले जाएगा कि हम लोग उसे ढूंढना पड़े कि यही रोस्ट के लिए अच्छा हो कि हम लोग उससे बार बार ऐसे प्रभु हम लोग जैसे नोरा ट्राइब के मेंबर अगर बन जाएंगे जीत के तो हम लोग बार बार ऐसा लॉ ना तोड़े कि कुछ उसे प्रॉब्लम हो No, you will Aloy. turn back, outcast, or bleed. Your choice. Make way! Make way! Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. You have? Oh, yes. But for the moment, I must leave you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja. Come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja? But that's my problem. We will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Oh, down the path to the right, you'll find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. What is going on? So ये है टेरेसा जिन्होंने बचपन में हमारे नामकरण के टाइम पे हमें ब्लेसिंग दिया था
ये हमें सपोर्ट तो करती है। तो आफ्टर मतलब प्रूविंग टेस्ट से पहले यहाँ में कुछ फेस्टिवल हो रहा है, तो जैसे उसने कहा कि थोड़ा एंजॉय कर लो फेस्टिवल, और कहा कि चलो हम लोग यहाँ में कोई दोस्त है, दोस्तों से जाके बात करें। तो यार इधर वो हम लोग अननोन, हम लोग किससे बात करेंगे यार, कोई जान पहचान वाला होना भी तो चाहिए। तो वो तो दिखाता तो हेलो, अरे ये वही है ना Aloy! It's you, isn't it? Over here. अच्छा टैब है इसका नाम। It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a long time ago. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. तो उसने हम लोगों को एक ड्रेस ऑफर किया। ये है नोरा ब्रेव, नोरा सर्वाइवल। कौन सा सही रहेगा? पैसा हम लोग के पास उतना नहीं है, ये खरीद सकती है हम लोग शायद से। काम करते पहले ना यही रखते, यही तो पहने हैं लगता हूँ। सेल का ऑप्शन आते हैं, हाँ यही तो पहने हैं लगता है। Wait, Aloy, you didn't take the outfit I made you. अरे रुको, Go on. It's yours. हाँ लेता भाई सब गलती से बैग खाई गया। देखो ये ड्रेस, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है इसका डिजाइन में ना, ले दो। हो गया। There. Seems to fit you perfectly. Thank you, Teb. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. You're gorgeous, you know, and you too. You're all gifts to the goddess. टैब की वजह से तो हम लोग को यहाँ पे नोरा ट्राइब का एक ड्रेस है, इस तरह बहुत सारा ड्रेस है वो इधर। कैसी है, कैसा लगता है ड्रेस देखने में? बढ़िया है, बस थोड़ा सी ये नीचे से डिज़ाइन है, सही है। तो ये वही बंदा है जो बचपन में एलॉय, हम लोग जब एलॉय जब छोटी थी तो एक बार वो ये बंदर है जो छलांग मार के फूस के जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ लेते। हाँ तो बचपन में जब वो इधर Get down from there! Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? क्या हो गया इसको? Not supposed to go climbing on other people's roofs, huh? क्या हो गया भाई साहब? Get down from there now!
Oh, शायद that's से just कुछ what ज्यादा you ही want, isn't टल्ली it? हो For me to गई है। fall on my head. What I want is for you to climb down. What you want is for me to have no fun at all. Fine. Stay up on the roof all night if you want. Yeah, I will. नीचे गिरेगा, हाथ पैर भी नहीं बचेगा, उतर जाओ आराम से। इसको औरत इतना प्यार से बोलती उतर जाओ उतर जाओ। Who's the climber? Listen carefully now, for you'll have to tell this when I'm gone. In the beginning, all life came Jarg from the all Climber. mother. It's not my name, but it should Beasts, all were her children. The proving was they lived alongside देखो each ऐसा कंटिन्यू चलते रहेंगे ना, बात करने मौका ही नहीं है। तो हाँ, वो टैप वही बंदा है जो पिछला बार बचपन में एलॉय ने उसे बचाया था। पिछला बार बचपन में जब छोटी थी एलॉय। The machines had whispered to them, promised to serve them. तो एलॉय ने उसे बचाया था। Aloy, over here. अरे ये तो वही बंदा है ना, अपना मर्चेंट जिससे हमने ट्रिप कास्ट खरीदा Coming था। over, Aloy. Karst? What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks on some of these faces when you... If you need any last-minute supplies, I'm your man. So, Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you, if you give me a discount. You can't be... I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. All right then, time to go. Good luck tomorrow, Aloy. थैंक यू। हाँ, कुछ चलता है यार। हम तो बेचारा रोस्ट का सोचता है, पता नहीं कहाँ होएगा, क्या करता है। पर कोई नहीं, एक बार ये टेस्ट पार कर लेने फिर ढूंढेंगे, देखते हैं ना। In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. For 2 years, we have been at peace with Akarja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. An enunciation of gratitude written Killers by the and hand slavers! of Yeah! Sun King of Killers and slavers! Hey, Hey, Nora Faithful, hold your fruit. Now I'm Azaram, not Karja, so I'll put it just straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. Now, who killed him? The 14th. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant Line. People of the Nora, on the eve of your proving, know the Karja stands with you, just like mine. as the sun's light frames. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why,
guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. Malfunction. Oh, Lynn? You making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No. We'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey. You got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids, and who can blame them? I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine breakers to a one. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. I wanted to ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'd be a better time to talk. I never heard anything about Red Raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh, yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God, it would calm the machines. Didn't work. But for years, he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost. So, what happened? How did it all end? The Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. And together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. So now the son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad, there's no more sacrifices, no more slavery. People from all tribes are welcome in Meridian now, even Nora exiles. You really should come visit. Who are the Oseram? Oh, that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now some of us serve proudly as his personal vanguard. Your sister was taken captive and sacrificed. That's terrible. Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away, and now she's my captain. Captain of the entire Vanguard. Favored by the Sun King himself. How did she survive? Oh, that's a story, all right, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, direct. You said the machines have been getting more dangerous every year. Yeah. First I've heard of it. Oh, I'm sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now.
When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at him. A few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. If that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers. But the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. Well, take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. I want to ask you about something you said before. Ask away. What else do you know about Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too, so, see you around, maybe? तो काफ़ी लंबा चौड़ा बातचीत हुई है यार, फिर बहुत कुछ जानकारी मिला भी। बात करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी बात करेंगे नहीं तो हम लोग को आगे का जानकारी कैसा मिलेगा। और जैसे इसने भी बताया और जैसे हमने नीचे में आते हुए टाइम में देखा था, टैब ने जैसे हमें बताया था कि ये सिर्फ अकेला एक नोरा ट्राइब ही नहीं, इधर कारजा ट्राइब है, फिर सन किंग करके है, और बहुत सारे ट्राइब वाले हैं यहाँ पे जो रहते हैं। और जैसे कि यहाँ अभी आपने देखा ही होगा, उस आदमी ने एरन नाम था शायद से, उसने जैसे अभी बाकी कुछ स्टोरी बताया उसने। Perhaps the Karja have come to make amends. I won't deny them the chance. People always say the festival was better last year or the year before last. Nonsense. खैर जो भी है, बातचीत होने के बाद आके सब कुछ पता चला कि आखिर कौन कौन है यहाँ में। और वो बंदा बड़ा अजीब था यार, ओलिन। उसके कानों में भी वो हमारे जैसा एक मशीन लगा था, मगर वो येलो कलर का डिवाइस था ना। उससे ज़्यादा बातचीत कर ही रहे थे कि ये एरेंट करके जो लड़का था अचानक से आई बात करने मिले। खैर जो भी है, चलो फिर चलते हैं आगे। आगे मैं आपको जैसे जैसे गेम चलते रहेगा मैं आपको स्टोरी बताते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसके न्यू पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन भी क्लिक ज़रूर कीजिए। और आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।